Good morning, students, and I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a very interesting chapter, that is traveling with grandfathers zoo. कि हम grandfathers के zoo में घूमने के लिए जा रहे हैं, traveling with grandfathers zoo, right? And we all know, for your information, we all know zoo is a place where all the animals they are kept for seeing us, कि हम लोग वहाँ पे जाके explore करते हैं, उन लोगों को देखते हैं. And there is a word we must have heard about, sanctuaries. What are wildlife sanctuaries? Where wild animals they are kept and they are protected from all the dangers, right? So, and zoo is a place where all species of animals they reside. Basically, it's a habitat for all the animals, birds, and all kind of species. They just reside their habitat in zoo only. So let's just begin with this. It's traveling with grandfather's Jew, right? And who has wrote this? Ruskin Bond. He is the writer of this poem. See, he is a very famous Indian writer of British descent. British descent means British के time के बहुत ही ज़्यादा famous ये एक writer है. He is one of the best known authors as well as storytellers. Yes, to be like he is actually a very famous author, right? And the story is about a young boy who goes on a trip with his grandfather, जो कि अपने grandfather के साथ एक trip पे जा रहे हैं, and he used to own a zoo, और जो कि उनके दादाजी का खुद का एक zoo है. They visit various places, बहुत सारी जगह घूमते हैं, and the boy he learns about different animals and their habitats. I already told you this word habitat means to live. जैसे आप लोगों का घर क्या है, आप लोग कहाँ रहते हैं अपने घर में, दिस इज योर हैबिटेट. Similarly, animals they have their habitats in zoo, right? So let's just read this. So all abroad shrieked Popeye, grandmother's pet parrot. उनका एक pet parrot है जिसका नाम है Popeye, right? As the family climbed abroad, जैसे कि family कहाँ चली गई, abroad means out of this country. लखनऊ एक्सप्रेस, abroad लखनऊ एक्सप्रेस गई हैं. We are moving for some months from Dehra to Lucknow. They are moving from कुछ महीनों के लिए they are moving from Dehradun to Lucknow. This Dehra is, I think it's Dehradun. And as grandmother insisted on taking her parrot along, and grandmother ने insist किया है कि हम अपने parrot को भी अपने साथ लेके जाएं. Grandfather and I insisted on bringing our pets too. हमारे भी कि हम भी अपने pet लेकर जाएंगे. A teenage tiger, एक teenage tiger है, और एक छोटी सी गिलहरी है जो कि बेरी है, squirrel, right? But we thought it that what is it prudent to leave the python behind? What do you mean by prudent? This word prudent means wise. क्या ये ठीक बात है कि हम अपने छोटे से टाइगर को घर पे छोड़कर चले जाएं? Now, in those days, trains in India they were so crowded. उन टाइम पे trains इतनी ज्यादा crowded हुआ करती थी that it was possible to travel with a variety of creatures. और पहले variety of creature के साथ आप लोग travel कर सकते थे. Grandfather had decided to do things in style by traveling first class. अब grandfather ने ये decide कर लिया था कि we will be going from first class. So we had four berth compartment of our own. First class, in first class what happened? We have only four seats like this. ऊपर नीचे इधर रहती हैं और यहाँ रहती हैं, ऐसे दो इधर and दो इधर, right? One and one, right? So they have four compartments kind of in first class. Now हमारे खुद के, एंड टिमोथी टाइगर का नाम क्या है, टिमोथी, एंड एंटायर बर्थ टू हिमसेल्फ. बर्थ इज बेसिकली अ सीट जो कि उसको ही दी हुई है, बर्थ, राइट? एक होता है बर्थ, ये वाला बर्थ, एक होता है ये बर्थ. दोनों की प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज इट्स एन होमोफोन, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं, राइट? होमो मीन सेम, दोनों को हम बर्थ ही बोलेंगे, बट वो वाला बर्थ इज अ कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन, वेयर एज दिस बर्थ इज जन्म लेना, राइट? एंड होल बर्थ इज गिवन टू दिस टाइगर नाउ, एंड हिज नेम इज टिमोथी. Now, later everyone agreed that Timothy जो है he behaved very perfectly throughout the journey. उसने बहुत अच्छे से behave किया. He behaved in a very decent manner. And even the guard admitted that he could not have asked for a better passenger. कि guard को भी ये लग रहा है हम लोग को इनसे ज्यादा अच्छा पैसेंजर और नहीं मिल सकता है. No stealing, कोई चोरी नहीं है from vendors. कि vendors means those persons जो खाने पीने का सामान लेकर आते हैं. No shouting at coolies, किसी भी कूली पे shout नहीं किया है. No breaking of the railway property, and no spitting on the platform, और उन्होंने प्लेटफॉर्म पे spit नहीं किया है, right? And this is the parrot Pothi, right now. And then all the same, the journey was not without incident. And before we could reach Lucknow,
देयर वाज एक्साइटमेंट इनफ फॉर एवरीवन, मतलब हम आराम से बिना किसी एक्सीडेंट के आराम से पहुंच चुके हैं लखनऊ, राइट। नाउ टू बिगिन विद पोपाय ऑब्जेक्टेड टू वेंडर्स। अब पोपाय जो है वो वेंडर्स को क्या कर रहे हैं, बेसिकली उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, एंड अदर पीपल पोकिंग देयर हैंड्स थ्रू द विंडो, और कुछ जो है वो अपना हाथ उस विंडो से बाहर निकाल रहे हैं। बिफोर द ट्रेन हैड मूव्ड आउट ऑफ द देहरा स्टेशन, देहरादून के स्टेशन से निकलती, ही हैड निप्ड टू फिंगर्स एंड ट्वीक्ड एट टिकट स्पेक्टेटर्स इन एयर। मतलब उसने क्या किया, अपनी दो उंगलियों को, ही हैड निप्ड टू फिंगर्स एंड ट्वीक्ड अ टिकट, उसने क्या किया, दो फिंगर से टिकट को ऐसा फोल्ड बनाया और वो किसके डाल दिया, इंस्पेक्टर के कान में डाल दिया। नाउ नो सूनर हैड द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग, फिर ट्रेन मूव होने लगी। देन चिप्स, अब चिप्स कौन है, मेरे स्क्विरल का नाम है। शी इमर्ज फ्रॉम माई पॉकेट, वो मेरे पॉकेट से बाहर निकली, एंड टू एग्जामिन दी सराउंडिंग्स टू सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, राइट। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, मैं उसको रोकता, ही वॉज आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डोर, ही जस्ट वेंट आउट ऑफ द कंपार्टमेंट डोर एंड स्करिंग अलॉन्ग द कॉरिडोर, सारे कॉरिडोर्स में ही इज जस्ट मूविंग अराउंड, रोमिंग अराउंड, राइट। Chips discovered that the train was squirrel's paradise. इसको क्या लग रहा है, ये squirrel के लिए एक heaven है. Almost all the passengers they are having brought large quantity of roasted peanuts before the train pulled out. कि इससे पहले कि ट्रेन चले, तो what happened कि she is feeling too excited that all the people have been present here and they are having peanuts. उनके हाथ में क्या है, मूंगफलियां हैं. And he had no difficulty in making friends with both children as well as the grown up. और उसकी आदत है, he has the habit of making friends with grown up as well as the children, and it was an hour before he returned to the compartment with his tummy almost busting, means he had a good friendship with all the other members of the train because, और उन्होंने उनको सारी मूंगफलियां थोड़ा थोड़ा सबने खिलाया और उसका पेट पूरा भर गया. Now I think I'll go to sleep, and grandmother is saying, I think मेरे को नींद आ रही है. So grandmother herself with a blanket and stretching out on a berth opposite Timothy, and it has been a tiring day. मतलब she's feeling little tired, so she want to take rest, right? Now, aren't you going to eat anything? Grandmother asked कि तुमको कुछ खाना तो नहीं है? I'm not hungry. I had some soup before we left. कि मैं बहुत ही ज़्यादा hungry नहीं हूँ. मैंने सूप पिया था निकलने से पहले. You too help yourselves from the tiffin basket, and you too आप एक दूसरे से टिफिन जो है शेयर कर लीजिए. Now grandmother dozed off. Grandmother is feeling very lazy. This dozed off means she's feeling very lazy. And Popeye start nodding. वो भी ऐसे मतलब थोड़ा सा lazy feel करने लगा, गर्दन हिलाने लगा. Lulls to sleep by the clackety clack of the wheels and the steady puff of the steam engine. अब कुछ आवाजें आने लगी ट्रेन की, and they are about to sleep because they all are feeling very tired. Well, I am hungry, I said. What did Granny make for us? कि हमारी Granny ने हमारे लिए क्या बनाया? I'm feeling little hungry. Ham sandwiches, boiled egg, roast chicken, gooseberry pie. देखिए gooseberry क्या होती है? You know what is gooseberry? Gooseberry होती है आंवला, right? उन्होंने लिए सैंडविच बनाए हैं, कुछ बॉइल्ड एग हैं, और गूसबेरी पाए मीन्स थोड़ी सी चटनी बनाई है, एंड इट्स ऑल अबाउट टिफिन बास्केट अंडर योर बर्थ, और हमारी बर्थ के नीचे, सीट के नीचे हमारा टिफिन रखा हुआ है. I tugged at the large basket and dragged it into the center of the compartment. मैंने इसे बाहर निकाला और उसे कंपार्टमेंट के बिल्कुल बीच में रख दिया. The straps were loosely tied. जो straps थे वो थोड़े loosely tied थे. No sooner I had undone them, the lid flew open and I let out a gasp of surprise. और देखा मैंने कि एकदम ढक्कन उठाया और सब कुछ मैंने देखा. It was all surprise. And what was the surprise? इन द बास्केट वॉज ग्रैंडफादर का कौन है, पेट है, पाइथन. और वो कौन पेट है, पाइथन. एंड ही इज कर्ल्ड अप कंटेंटली ऑन द रिमेन्स ऑफ हर डिनर, और वो हमारे डिनर के साथ उसको अच्छे से पैक किया हुआ है. इसको, पाइथन को. ग्रैंडमदर हैड इंसिस्टेड दैट वी हैव लेफ्ट द पाइथन बिहाइंड. ग्रैंडमदर टोल्ड ना कि हमको ये छोड़कर आना है. द ग्रैंडफादर हैड लेट इन लूज इन द गार्डन, और ग्रैंडफादर कह रहे हैं कि मैं उसको गार्डन में हैड लेट इट लूज इन दी गार्डन, में उसको गार्डन में लूज करके आया था, बट somehow it managed to struggle itself into the tiffin basket, और कुछ भी करके he just entered into our tiffin basket. I don't know how he came. Now, well, what are you staring at? Grandfather asked from his corner. अपने corner के लिए तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? Right, is it python? I said it. I have finished all our dinner. और ये python ने हम सबका dinner खा लिया है already. Now grandfather joined me and together we looked down at what remained of the food, कि अब क्या खाना है. Just went down और देखा कि अब क्या खा सकते हैं हम लोग.
Pythons don't chew, they swallow. Unlined under along the length of the large snake's sleek body की pythons क्या है, chew नहीं करते, वो सिर्फ निगल लेते हैं सारे खाने को. पर distinctive shapes of a chicken, उसकी जो large snake sleek body है वो ऐसी है जैसे कि बड़ा सा क्या हो, shape of the chicken. एक पाए था, 6 boiled eggs थे, वो सब उसने खा लिए हैं. We couldn't make out the ham sandwiches, but presumably these has been eaten too. और हम सामने सैंडविचेस का भी नहीं सोच सकते, वो भी उसने खा लिए हैं, बिकॉज देयर वाज नो साइन ऑफ देम इन द बास्केट, और ऐसा उनमें कोई भी साइन नहीं है कि कुछ खाना भी हमारे लिए बचा हो, राइट. ओनली अ फ्यू एप्पल्स रिमेन, सिर्फ कुछ एप्पल्स बचे हुए हैं. एंड एविडेंटली जो पाइथन है, दिख रहा है सबूत के तौर पे कि सब कुछ खा लिए, सिर्फ एप्पल्स बचे, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक एप्पल्स, बिकॉज ही डू नॉट केयर फॉर द एप्पल. ग्रैंडफादर स्नैप्ड द बास्केट शट एंड पुट इट beneath the berth, और बर्थ के नीचे वापस से उसको डाल दिया. Now you can see this is how they are. This is a python, right? सब कुछ खा गया ये इनका खाना. We must not let grandmother see him, he said. She might think that we had brought him along in the सरप्राइज. वो कह रहे हैं कि हम ये अपनी दादी को नहीं दिखाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हम लेकर आए हैं उसको साथ में जानबूझ के. वेल आई एम हंग्री, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है. आई कंप्लेन, और मैंने कंप्लेन किया. जस्ट देन चिप्स रिटर्न फ्रॉम वन ऑफ हिज फोरेज एंड प्रेजेंटेड मी विद अ पीनट, और वो स्क्विरल कुछ ना कुछ पीनट्स लेके आई एंड शी जस्ट प्रेजेंटेड टू मी, राइट. Thanks, I said. If you keep bringing me peanuts all night, I might last morning. कि तुम peanuts लेके आती रहोगी, इतने इतने से peanuts से मेरा कुछ नहीं होगा, सुबह तक मैं खाता ही रहूंगा. Now, before it was too long before I felt sleepy, he also felt too sleepy, and grandfather had begun to nod. वो भी नशे में थोड़ा सा, like he was feeling too sleepy. And only one of who's wide awake was the squirrel. वो सिर्फ squirrel ही है who was awakened, still intent on the investigating the distinct department, different compartment को she was investigating. Now, a little after midnight, there was a great clamor at the end of the corridor. कॉरिडोर के आखिरी में क्या अजीब सी चीज को देखते हैं हम. Grandfather and I woke up. मैं और grandfather उठे. Timothy growled in his sleep. Timothy is अपने sleep में है. Popeye made complaining noises. Popeye वो complain कर रहा है. बहुत आवाजें आ रही हैं, बहुत आवाजें आ रही हैं. Right. Suddenly there was a cries of सांप. सांप kind of a snake की कुछ आवाजें आने लगी. Grandfather was in his feet in the moment. उस moment पे अपने ऊपर पैरों पे खड़े हो गए. He looked under the berth. उन्होंने देखा कि टिफिन बास्केट कैसा है, खाली. Right now. The python out, he said, and dashed out of the compartment in his pajamas, and I was close behind. और वो अपने पजामा में ही कंपार्टमेंट में घूमने लगे, और बहुत ही ज्यादा हर कंपार्टमेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करने लगे. Now, about a dozen passengers were bunched together outside the washroom door के बाहर. सारे के सारे dozen of the around 12-13 passengers, they were just gathered over there around outside the washroom door. Now, anything wrong? asked the grandfather casually. Grandfather ने पूछा, कुछ wrong? Anything happened with you all? We cannot get into the toilet, said someone. There is a huge snake inside the toilet. कि washroom के अंदर कौन है? टॉयलेट वॉशरूम के अंदर कौन है? स्नेक है, and we cannot get into toilet. Let me have a look, said grandfather. I know all about snakes. मुझे snake के बारे में सब कुछ पता है. Let me just see it. The passengers made way for him. Passengers ने उनके लिए रास्ता दिखाया. And he entered the washroom to find out the python. Python को देखने के लिए. Curled up in the wash basin. Wash basin के ऊपर he is just curled up like this. And after his heavy meal, he had become thirsty. और उसके मील खाने के बाद he is feeling little bit thirsty. And finding the lid कि वो ढक्कन उठा के पानी पी ले. Of the tiffin basket was easy to pry him. कि मतलब उसको easy था कि वो ढक्कन उठा के lid से बाहर निकल गया in search of water. Water की search में. Grandfather gathered up the sleepy overfed python. उसको उठाया. He just stepped out of the washroom से बाहर निकले, and the passenger hastily made way for them. Hastily means very quickly. उसके लिए उसको रास्ता आगे दिखाया. Right now. Nothing to worry about, said grandfather ने कहा. आप आराम से, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. It is just a harmless young python. ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा. He had his dinner already. इसने अपना डिनर खा लिया है. No one in any danger. किसी को कोई डेंजर की कोई बात नहीं है. सब लोग अपनी सीट पे वापस जा सकते हैं. And he marched back to our compartment with the python in his arm as soon as I was in
inside he bolted the door, और उसने दरवाजा बंद कर लिया. Right. Grandmother was sitting अपनी सीट पे बैठी हुई थी, हमारी दादी मम्मी. And I knew you had done something foolish behind my back. कुछ ना कुछ तो तुमने उल्टा किया है मेरे पीठ. You told me you got rid of that creature and all the time you have been hiding it from me. तुमने मुझसे कहा था कि इसको घर छोड़ के आओगे, बट ऑल द टाइम तुम मुझे उसको मुझसे छुपा रहे हो. नाउ ग्रैंडफादर ट्राई टू एक्सप्लेन दैट वी हैड नथिंग टू डू विद, कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट द पाइथन हैड स्मगल इटसेल्फ इनटू द टिफिन बास्केट, में वो खुद ही था, अपने आप आ गया, उसने सब कुछ खा लिया. ही वाज नॉट कन्विंस्ड. दादी जो है वो अनकन्विंस थी, वो उनकी बातों को समझ नहीं पा रही थी. एंड व्हाट विल द मार्बल डू व्हेन ही सीज इट, शी क्राइड डिस्पेयरिंगली. वो कह रहे हैं कि जब मार्बल उसको देखेगा तो शी विल बी फीलिंग वेरी. डिस्पेयर मीन्स अ कंडीशन ऑफ नो होप, कि जहाँ पे आपको कोई आशा ना हो. राइट. माई आंट मार्बल वॉज अ स्कूल टीचर. मेरी आंट मार्बल जो है वो एक स्कूल टीचर है लखनऊ में. शी वॉज गोइंग टू शेयर आर न्यू हाउस. वो अपने घर में हमको बुलाने वाली है, नए घर में. एंड शी वॉज टेरिफाइड ऑल द रेप्टाइल्स, और वो रेप्टाइल से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइड है, डरी रहती है, स्पेशली विद स्नेक्स. एंड हु आर रेप्टाइल्स, जो क्या करते हैं, रेंगते हैं. नाउ वी वोंट लेट हर सी अगेन, ग्रैंडफादर इज सेइंग, हम उसको नहीं देखने देंगे, बट ये वापस टिफिन बॉक्स में चला जाएगा. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग ट्रेन कहाँ पहुंच गई, लखनऊ में. एंड Aunt Marvel, she was on the platform to greet them. Right now, grandfather had let all the passengers get off before he emerged from the compartment. Compartment में निकलने से पहले उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया. The Timothy on a chain, Timothy जो है उसको चेन में है. Right. I had chips in my pocket, chips मेरी पॉकेट में है. सूटकेस मेरे दोनों हाथों में है. एंड Popeye जो है start perched on grandmother के शोल्डर पे चल रहा है वो. Busy platform with considerable distrust. Distrust means घृणा करना किसी से. Right. Now, Aunt Marvel, a lover of good food, immediately spotted the tiffin basket. उन्होंने देखा टिफिन बास्केट को, वर्कर्स उनको खाना बहुत ज्यादा पसंद था. एंड शी जस्ट पिक्ड इट अप, उसको उठाया. एंड सेड इट्स वेरी हैवी, आई कैरी इट टू द टैक्सी. मैं आपके लिए उठा लेती हूँ, बहुत ही ज्यादा हैवी है. आई होप यू हैव केप्ट समथिंग फॉर मी, कि आप कुछ ना कुछ तो मेरे लिए लेकर आए होंगे. नाउ अ होल चिकन, आई सेड, क्या आप मेरे लिए चिकन लेकर आए हो? वी हार्डली एट एनीथिंग. ग्रैंडफादर ने कहा, हमने कुछ नहीं खाया है. all yours, auntie, I said. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ क्या है, आपका है. Right. Now, oh good, exclaimed Aunt Marvel. कह रही है, she's feeling very happy. Been ages since I ate something tasty which is cooked by your grandmother. कि मेरी दादी ने मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा बनाया हो, ये बहुत टाइम हो गया कि मैंने उनके हाथ का कुछ अच्छा खाया है. राइट. एंड आफ्टर दैट देयर वाज नो ग्रीटिंग, नो गेटिंग द बास्केट अवे फ्रॉम हर. और फिर से वो बास्केट लेकर बैठ गई है और छोड़ ही नहीं रही है. राइट. नाउ ग्लांसिंग एट इट, उसको देख रही है. आई सेड द लिड बल्जिंग, कि लिड जो है बहुत ही ज्यादा बल्ज कर रहा है, ऊपर से हिल रहा है. द ग्रैंडफादर हैड टाइड इट विद अ क्वाइट firmly this time, and there was a little likelihood of a suddenly busting open, कि धीरे धीरे कोई क्रिएचर बाहर आ रहा हो, लेकिन ग्रैंडफादर ने प्योर उसको बहुत टाइटली बंद करके रखा है. An enormous 1950 Chevrolet taxi was waiting outside at the station. के बाहर हमारी वेट कर रही है 1950s की. फैमिली टम्बल्ड into it, और फैमिली जो है अंदर बैठ चुकी है. नाउ टिमोथी गॉट इनटू द बैक सीट. टिमोथी बैक सीट पे बैठे हुए हैं. लिविंग इनफ रूम, रूम मीन स्पेस. दादाजी के लिए थोड़ी जगह छोड़ी भी है और अपने लिए. राइट. एंड आंट के लिए मार्बल्स. शी जस्ट सैट विद ग्रैंडमदर के साथ बैठी हुई है. और टिफिन बास्केट वो कहाँ है, उसकी लैप में, उनकी गोदी में है. नाउ टिल द ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर सिंह, कि कहाँ चलना है बताइए ग्रैंड मदर. ही इज लुकिंग रादर नर्वस, और वो बहुत ही ज्यादा नर्वस लग रहा है. Aunt Marvel gave instructions to the driver and taxi showed it in the cloud of dust. What do you mean by cloud of dust? Means गाड़ी को उड़ाते हुए चल रहे हैं, as fast he can drive now. And here we go, grandfather said. I'm looking forward to settling into a new house. कि मैं घर में जल्दी से जाके आराम करना चाहता हूँ. Popeye perched proudly grandmother के शोल्डर पे है. He kept on a suspicious eye. Suspicious means एकदम keen eyes. On the quivering twin box all abroad, he squeaked all abroad. बाहर आने वाला है ये. Suspiciously means doubtfully he has his eyes on that basket. Right. Now we got our new house. We found a little light breakfast waiting off for us on the dining table पे. हमने बहुत light सा breakfast बनाया है जो आपके लिए wait कर रहा है. It isn't much, Aunt Marvel, but we are supplemented with a
contents of are your hamper. हम खाने के साथ साथ कुछ hampers भी होंगे, right? And placing the basket on the table, she removed the lid. और जैसे ही basket के ऊपर वो रखा उन्होंने टेबल के ऊपर, उसने lid को हटा दिया, ढक्कन को हटा दिया, right? And पाइथन जो है, he was asleep, half asleep, कुछ नींद में था और कुछ सेब उसके मुंह में थे. Now, when Aunt Marvel on no Eve, but he tempted, she fainted away. और उनको क्या हो गया? उनको चक्कर आ गए. Grandfather promptly picked up. Promptly means very quickly. Very important word. Grandfather ने उनको उठाया, पाइथन को, and took it to the garden and just draped it on a branch of a guava tree के ऊपर उसको drape कर दिया वहां पे, वो like curl करके कर दिया. Now when Aunt Marble recovered, जब Aunt Marble ने recover किया, she insisted that there was a huge snake in the tiffin basket. उन्होंने कहा कि टिफिन बास्केट के अंदर क्या था, एक बहुत ही बड़ा स्नेक था. We showed her empty basket और तुमने उसको empty basket दिखाई. You are seeing the things that grandfather, आप देख रहे हैं चीजों को. It must be the heat, I said. वो शायद वो क्या हो सकती है, हीट हो सकती है, कि हीट की वजह से, गर्माई की वजह से उसका ढक्कन बार बार ऊपर आ रहा हो. Grandmother said nothing. Grandmother ने कुछ नहीं कहा. Popeye broke all the shrieks of the maniacal laughter, and soon everyone, including a slightly hysterical Aunt Marvel, was doubled up with laughter. मतलब ये जो है, ये पोपाय ने सब कुछ क्या कर दिया, और हंसी में उसकी बातें सारी निकल गई और फिर सारे परिवार को पता चल गया, and everybody was laughing. So this chapter was quite amazing, that how these family members, they are along with their creatures, different species, they are carrying along with them in a train, they are enjoying how the squirrel, the python, the tiger. But in actually real life, don't do this, because taking pets in railways and all, in planes, it is not allowed. You have to take the permission from the government respectively. Apart from that, you have to take their tickets also. Please don't do this, because this is not actually allowed. This was just a fiction story. It's just for your enjoyment. Please go through this and learn all the word meanings that you came across. Stay blessed and keep smiling. Thank you.